नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूं आरबीए डेंटल केयर सेंटर फरीदाबाद सेक्टर 15 में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीता दुग्गल आहूजा जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं। ये बहुत अच्छी डेंटिस्ट है इम्प्लांट की, तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में और जानते हैं इन्होंने अब तक कितना टाइम इनको इस डेंटल केयर में हुआ है। तो चलिए, स्वागत है मैम आपका राइट इंडिया प्लस पे। Thank you and thank you for having me on your channel. Yeah. ओके मैम, सबसे पहले अपने हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। Okay, as you all know, I'm Dr. Puneeta and I practice at RBA Dental Care, which is located in Sector 15 in Faridabad, which is in NCR. And we've been practicing here for over 12 odd years now. And before that, I was in Bangalore, where I was, an assistant professor, and I was teaching in an institution there. And I've been in private practice thereafter, and also sporadically into training other dentists. Yeah, that's it. I've done my master's in, I'm a master's degree holder in endodontics, and then I have gone in to do my specialization in implants also. So I also do dental implants for the past over a decade now. I went on to do my bachelor's degree, and जिसमें I topped the University of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, which is the largest university of the country. So when I passed out, I was felicitated by the governor of Karnataka for topping the university out of the 42 dental colleges in Karnataka. I was also I also got the award for the best student for the outstanding performance by my college. And thereafter I went on to do my master's degree in endodontics, and then I taught in a dental college for about 2 years' time, and I was also associated with Apollo White and Narayana Harudyala as a consultant endodontist, where I also went on to do my cross specialization in dental implants. And then I moved on to Faridabad, and here I am practicing thereafter, also partly into training of other dentists, and me and my husband both are into it. So it's like that. तो मैम, जैसा कि आपने बताया अभी है कि आप इम्प्लांट के अंदर स्पेशलाइजेशन आपने किया है, तो हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो जनता है, वो ये जानना चाहेगी कि एक्चुअल में ये होता क्या है। Yeah, see, so I am a master's degree holder in endodontics. I have done my cross specialization into implants. I'm a certified implantologist, and RCTs are something that deals with प्रिजर्वेशन ऑफ योर नेचुरल टूथ, वेराज इम्प्लांट जो है वो थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है। जब आरसीटी का स्कोप ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से इम्प्लांट का स्कोप शुरू होता है। सो इफ़ यू हैव वन और मोर मिसिंग टीथ इन योर माउथ, दैट्स व्हेन द रोल ऑफ इम्प्लांट कम्स इन। पहले टाइम पे देयर वर डेंचर्स दैट वर गिवन, आवर ग्रैंड पेरेंट्स हैड दैट dentures that they used to take out and put it in a glass of water and keep it there for the night. And तो आजकल उसका concept जो है वो चला गया है, so उसको substitute कर दिया है dental implants ने, because they are fixed. So वो निकालने उतारने वाला जो hassle है वो नहीं है। So एक तो वो है, दूसरा जो chewing efficiency है, I think being able to chew the food you love is a kind of quality of life. So fixed teeth or fixed implants help you give that quality of life, because when you're aging your body needs more nutrition. आपके body को ज़्यादा nutrients की ज़रूरत होती है, और उल्टा आपके teeth जो है वो you have lost your teeth because tooth की age कितनी है, 40-45 ईयर्स तक पहुँचते 90% पॉपुलेशन को कोई ना कोई डेंटल एलिमेंट आ ही जाती है। सो बाय द टाइम यू आर 60-70, यू आर एजिंग, आपका एक नेचुरल डिजेनरेशन प्रोसेस चल रहा है बॉडी में, ऊपर से कोई ना कोई प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो ही जाती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ दैट मेडिकल कंडीशन आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं और आप न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं। सो आई थिंक that's very bad for your body. So fixed teeth will give you the liberty
to have whatever you can, you know. So that's why it is better to choose for this kind of implant supported, you know, dentures देन एनीथिंग एल्स. और आजकल तो एक एक मिसिंग टूथ के लिए भी हम भी सजेस्ट करते हैं, पेशेंट्स में भी अवेयरनेस है, दे कम एंड दे आस्क फॉर dental implants. I think this is a good way of, because of the awareness through social media, etc. We have a lot of patients who come in and ask about dental implants, get dental implants done even for one tooth missing. So that's the way the things are going. Yes. मैम, आपका जो ये आरबीए सेंटर है दांतों का, तो इसमें और क्या क्या सुविधाएं जो पेशेंट्स होते हैं उनको दी जाती है इम्प्लांट्स के अलावा? Okay, see, one thing that I take pride in telling, and I always tell my husband also, he's also a specialist dentist like me, so I always tell him that, you know, we get the most challenging cases of Delhi NCR, you know, which have been turned down from elsewhere. And I think God is great and He has given us that, you know, we have that in us, that we are able to, touch wood, take care of such type of patients and cases. So अगर आप मुझसे पूछे क्या क्या किया जाता है, तो I mean we do everything we can, you know, within the physiological possible limits to help patient get the solution that he has come to me for, right? So I think we do everything, right from root canals to Invisaligns to implants, full mouth implants. So we follow a specialist care here. So everyone looks after their specialization. We have a lot of specialists under one roof, क्योंकि dentistry में 9 type की specializations होती हैं. So we have every specialist on board who comes to us on daily basis. They are under our panel. They are with us every time. So we take care of the patient. The patients are coordinated and everything goes in. So we have very strict and stringent way of taking care of cases. मतलब एक प्रोटोकॉल हम डाल देते हैं अपने सेंट्रलाइज सिस्टम में, कभी भी रात को भी दिन में भी, और कोई भी हमारे डॉक्टर जो हैं वो उस प्रोटोकॉल को एक्सेस करें, ताकि पेशेंट का ये नहीं दैट पिछले डॉक्टर ने क्या किया, हमने क्या किया. सो एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज. सो इवन इफ द पेशेंट कम्स टू अस 10 years later, या उनके किड्स या उनके केयर टेकर्स कम टू अस 10 years later, we have the records in place. So that's how our system works. We have full mouth x-rays, we have everything that you know, a patient would ask for. So we have a national presence here in Faridabad. Yes. तो मैम, बीइंग अ लेडी आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा? See, when I started my journey into this medical profession, we didn't realize, you know, we didn't realize certain things. But as you come down into practice, I don't think it was difficult. I love to take up challenges. So there are little doubts sometimes somewhere, but then you go through it. Yes, you know, as I told you that my family, my friends, my parents, everyone has been very kind to me, and we've been just able to go through all these things, sail through all the difficult times, all the challenging times, because as a lady, as a woman, you know, everyone faces it. It's not that I faced it. Everyone has tough times in life, but you know, there's a popular saying, you know, when the going gets tough, the tough get going. So I firmly believe on that, and time passes. So that's the way it is. Yes. तो मैम, आप ये आरबीए सेंटर कितने वक्त से यहाँ चला रहे हैं? It's been over, ऐसा काउंट तो नहीं किया, बट 12 odd years तक तो हो चुके, मे बी इवन मोर देन दैट हो चुके, बिकॉज वी हैड अ स्मॉलर स्केल एंड देन वी एक्सपैंडेड इट, एंड वी ऑल्सो हैड अ सेंटर एल्सवेयर. So it was, maybe the location was here, but we've been here and there, and we've been into practice. Yes. मैम, अगर जैसे आपसे कोई डेंटल चेकअप कराने आना चाहे, कोई अननोन पर्सन, तो वो किस तरह से आ सकता है? क्या टाइमिंग आपकी? So our timings are, we open from about 9 o'clock. The center opens. We are available from 9:30, 10 till about 6:30, 7 in the evening. And mobile numbers, I think, will be given to you, the receptions, and whatever contact numbers are there. So we are available. We are just a call away. And we have our doors open for anyone who is in trouble. Yes. मैम, कोरोना काल एक बहुत बुरा काल निकल के चुका है. हमारे जो देश है, हमारी इवन दुनिया ने इसको बहुत फेस किया है, बहुत प्रॉब्लम से फेस करी हैं. तो उस टाइम के बाद, उस टाइम से पहले और उस टाइम के बाद में कितना बदलाव आया है, और क्या नई प्रॉब्लम्स दांतों में देखने को मिली है?
Yes, I'm sure pandemic was a phase that has shaken everyone. हमारे parents, grandparents, किसी ने ये चीज़ कभी सोची नहीं थी कि पूरा world can come to a standstill, and COVID has proved that the nature is the mightier and no one is bigger than the nature. So in a way that what has changed, people have become more aware. बिकॉज आप कॉमनली ये टर्म्स आप लेमैन से नहीं सुनते थे, स्टेरिलाइजेशन, सैनिटाइजेशन, एंटीबॉडीज़. सो अगर मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़े अपने पेशेंट को इन 2019 कि वैक्सीनेशन क्या है और कैसे एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं, तो it was a challenge. But nowadays the patients come and tell us we have so many antibodies, ये sterilization होता है, ये sanitization होता है. So I am very happy that that sort of awareness has come, and people have had the they have realized the importance of wearing a mask. So mask ने खाली कोविड को प्रोटेक्ट नहीं किया, और भी बीमारियों के जो incidences थे, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्यूलोसिस etc., have come down drastically. Because I'm not sure, though I'm not quoting datas here, but yes, that awareness, like TB is a disease that you can contract even despite your vaccination. So that kind of awareness is coming in the patients. So I'm really happy that it has made the general population aware. So we can call ourselves the millennials. And from my point of view, dental ailments, mucormycosis etc. have been on the rise, but now people know that they have to take, how much medicine they have to take, किसकी consultation से लेना है. So that ways things have changed for good, I feel. Yes. मैम, जो डेंटल इम्प्लांट है इसका क्या प्रोसीजर रहता है? देखिए, डेंटल इम्प्लांट जो है वो 2 फेजेस में होता है. अगर हम एक कन्वेंशनल इम्प्लांट के बारे में बात करें, सो पहला फेज़ जो होता है वो हमारा सर्जिकल फेज़ होता है, जो 15 से 20 मिनट का एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, जो लोकल एनेस्थीसिया जिसे हम कहते हैं. देखिए, 2 टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं, या जिसे हम कहते हैं सुन करना. एक तो होता है जनरल एनेस्थीसिया, इन विच वी पुट द पेशेंट टू स्लीप फॉर कपल ऑफ आवर्स. एक होता है लोकल एनेस्थीसिया. तो ये एरिया या जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको सुन कर दिया जाता है. सो द पेशेंट इज़ अवेयर. आप मेरे से बात कर सकते हैं, यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, आप देख सकते हैं हर चीज़. बट वो येस, दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज़ नम्ड. तो वो एक छोटा सा बिल्कुल ही पेनलेस इंजेक्शन होता है, उससे हम नम्ब कर देते हैं. सर्जिकल फेज़ 15 से 20 मिनट का होता है, दैट गोज़ इन, एंड उसमें हम एक इम्प्लांट बॉडी जिसे हम कहते हैं वो हम लगा देते हैं. सो बेसिकली इम्प्लांट जो है वो 3 पार्ट्स में होता है. देयर इज़ इम्प्लांट बॉडी, देयर इज़ एन अबटमेंट, एंड देन देयर इज़ अ क्राउन दैट कम्स ऑन द टॉप. सो you as a patient have come to me for the crown or the cap, right? So उसके नीचे जो हम फाउंडेशन लगाते हैं, that is the implant body and the abutment. So implant body and abutment जो है वो हम phase 1 में लगा देते हैं. phase 2 जो है वो आता है 3 months के बाद. So we keep the patient on hold, या we leave the implant body to heal there for 3 months. And 3 months के बाद में जो है हम वहाँ पे परमानेंट कैप लगा देते हैं. अच्छा, ये 3 मंथ्स के टाइम पे कभी कभी हम बीच में ही टेम्प्रेरी कैप लगा देते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, अबटमेंट और इम्प्लांट लगा के टेम्प्रेरी कैप लगा दिया, और 3 महीने के बाद फिर टेम्प्रेरी कैप हम हटा के परमानेंट कैप लगा देते हैं. सो ये बात हुई सिंगल इम्प्लांट की. ऐसे ही फुल माउथ आते हैं. फुल माउथ मतलब ऊपर और नीचे का जॉ दोनों में हमने कुछ इम्प्लांटेशंस किए, और फिक्स्ड दांत जो थे वो हमने लगा दिए. कभी कभी सिंगल जॉ होता है, नीचे के दांत ठीक है, ऊपर के सारे पेशेंट ने लूज़ कर दिए. कभी कभी ऊपर के ठीक है, नीचे के लूज़ कर दिए. तो सिंगल जॉ इम्प्लांट्स भी उसी तरीके से किए जाते हैं. सो व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज हियर इज़ दैट इम्प्लांट्स are good from all the companies, but your operator's skill is very important. because जैसे रूट कैनाल्स फेल हो जाती हैं, वैसे इम्प्लांट्स अगर एक पर्टिकुलर स्किल या टेक्निक से नहीं किया जाता, तो मेरे पास में बहुत कॉमनली पेशेंट जो है वो लेके आते हैं, ये देखिए ये हमारा इम्प्लांट जो था वो निकल गया. सो द स्किल, yes, so the skill of your surgeon is very important, because implant तो सारे अच्छे होते हैं. They will have a lot of companies. You have American companies, you have companies from the UK, so many companies you have, Korean companies. But जो लगाने का या implantation का जो skill है, that is by far very critical.
So you have to make sure that the dentist or the surgeon you're going to is good at what he does. फिर कहीं एक teeth in 72 hours या teeth in 2 days भी आते हैं. So वो पर depend करता है अगर आपका case है, because clinical judgment is something which is very integral when you're doing implants. अगर आपके surgeon का या आपके doctor का जो है वो clinical judgment में error हो गया, then you will face the brunt like that. So it's a very predictable procedure. It is a very high success rate. So don't get scared in getting the procedure done or have any apprehensions in doing it. But make sure the person you're going to is the right person. So you land up in the right hands. मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमें हमारे दर्शकों के लिए. Thank you. Thanks for having me again. And I'm thankful that I could do a little bit in making everyone aware. Thank you. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो